Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to discuss about test cross, back cross and reciprocal cross. So let's start our topic. We will start with test cross. Test cross, as the name suggests, that this cross is used to test something. कुछ टेस्ट करने के लिए क्रॉस किया जा रहा है तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. देखते हैं क्या टेस्ट करना है. In the test cross, we want to test, if we want to test the genotype of any unknown. अगर हम किसी unknown का genotype of unknown, if we want to know the genotype of any unknown, then we use the test cross. उस केस में हम test cross use करते हैं. Like the same example we will take here. हम यहाँ पे example लेके चल रहे हैं when we did the crossing of pure tall and pure dwarf plant का हमने यहाँ पे crossing किया. In this case we get the hybrid, this F1 hybrid. F1 generation में हमें hybrid condition मिल रही है. But we don't know, हमें ये नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है. The plants are the tall plant, that is the heterozygous tall. But मेंडल को भी नहीं पता था और हमें भी नहीं पता that which kind of genotype of this plant has. It's the tall plant, but we don't know the genotype of this plant. Then in this condition we can conclude the genotype of this plant by using the test cross. In the test cross, the unknown organism or unknown hybrid जो भी है, जिस भी unknown का हमें जीनोटाइप पता करवाना होता है, that is crossed with one of its parent and that parent is a homozygous recessive. तो अगर हम ये क्रॉसिंग करवा रहे हैं इस अननोन की, इसकी जीनोटाइप पता करने के लिए, इस F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग अगर हम करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, देन दिस क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. इस क्रॉस को हम क्या नाम देंगे? टेस्ट क्रॉस. This cross is known as test cross. So let's see what we will get when we do the crossing. अगर यहाँ पे हम crossing करवा रहे हैं, we'll take some example to understand in better way कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास unknown की कोई भी कंडीशन हो सकती है. हम हर तरीके की कंडीशंस को, पॉसिबिलिटीज को लेके टेस्ट क्रॉस को वेरीफाई करेंगे. Suppose we can get there are the chances of the three possible condition of this F1 hybrid. हमारे पास three possible conditions हो सकती हैं. That F1 hybrid could be of homozygous dominant. Homozygous dominant हो सकता है, homozygous और heterozygous. This heterozygous dominant हो सकता है, और it could be dwarf. अगर ये dwarf है तो उस केस में ये homozygous recessive होगा. So these are the three conditions that we can be get with any unknown. ये हम हर किसी unknown के cases में ये तीन conditions हमें मिल सकती हैं. So to do the test cross, we have to cross with the homozygous recessive. इनकी क्रॉसिंग हमें करवानी है with homozygous recessive parent के साथ. When we did this crossing, now we will do the same type of procedure जो हमने already किया हुआ है. Here in this condition, let's draw the Punnett square to get the result. हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं इस कंडीशन में देखते हैं. Here two types of gametes, that is that this capital homozygous dominant, it will form the dominant alleles, and this will has homozygous recessive condition where the small t gametes will be formed. And after fertilization we will get the plants that all will be the tall plant. यहाँ पे fertilization के बाद हमें जो plants मिलेंगे, जो offsprings मिलेंगे, all these offspring will be of tall. सभी के सभी tall होंगे. So in this case we can say that phenotype ratio of this test will be 4:0. इस केस में हमें जो phenotype ratio मिलेगा वो मिलेगा 4:0 का. 4 will be the tall plant and not any plant will be short plant. तो कोई भी short नहीं होगा, कोई भी dwarf plant नहीं होगा. Suppose this F1 hybrid is capital T or small t. We have no idea. We want to cross it. So we cross these plants with the homozygous recessive parent. हम homozygous recessive parent के साथ इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे. So let's see what result we will get. इस कंडीशन में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. Here two types of gametes will be formed. One will be dominant allele, another will be that recessive allele. And here two recessive alleles, recessive gametes are present here. And the offspring that will be formed, that is capital T, small t, small t, small t, that capital T, small t and small t, small t. In this type of cross, where the unknown will be of heterozygous dominant, जहाँ पे heterozygous dominant unknown होगा, वहाँ after test cross we will get the result of
दिस वे यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो जो होगा वो होगा हमारा 2:2 का, और वी कैन से द फिनोटाइप रेशियो विल बी 1:1 in this cross. And in the third condition, where we can say that if the unknown is homozygous recessive, अगर हमारा homozygous recessive parent है, हमें नहीं पता but we have to want to check the genotype, हमें check करना है. Then again we will do the crossing, हम crossing करवाएंगे, and in this condition you know we get all the dwarf plant, क्योंकि कोई भी यहाँ पे dominant allele present नहीं है, we just get the dwarf plant here. यहाँ पे हमें सारे के सारे जो plants मिलेंगे वो मिलेंगे dwarf plant. That small t, small t, small t, small t, small t, small t, and small t, small t. So phenotype ratio of this type of cross, इस केस में phenotype ratio जो होगा वो होगा 0:4 का. So by observing this result, this ratio of these crosses, we can conclude the genotype of any unknown. हमें एक का पता है, we know that this is homozygous recessive, ये हमारे लिए श्योर है, और हमें इस unknown का नहीं पता कि क्या है. तो जब भी आप एक unknown का क्रॉस उसके recessive homozygous recessive parent के साथ करवाते हैं, then what kind of ratio we will get, what kind of phenotypic ratio we will get, it can give you the result of the unknown genotype. उसी से आपको unknown genotype का result मिल जाएगा. If we are getting the equal 50-50% of both type of plants या both type के organism हमें मिल रहे हैं 50-50% पे, then we can easily observe that unknown genotype is of heterozygous dominant. तो उस केस में heterozygous dominant होगा. If we are getting all the dominant alleles in the offsprings, या फिर सभी के सभी dominant अगर हमें मिल रहे हैं plant, सभी के सभी tall मिल रहे हैं, then we can easily conclude that unknown plant is of homozygous dominant alleles. उसमें homozygous dominant allele present है. So this is the way by which we can easily conclude the genotype of any unknown hybrid or unknown plant या unknown egg organism. The second type of cross is the back cross. एक और cross अब हम देखेंगे यहाँ पे इसी के साथ, that is the back cross. Back cross, as the name suggests, is a back cross. Back means कुछ हम कर रहे हैं. Back यहाँ पे जो crossing हो रही है वो F1 hybrid की crossing होती है with any one of its parents. किसी भी एक parent के साथ अगर cross हो रहा है तो उस cross को हम बोलेंगे back cross. Again, the same example, like pure line tall and pure dwarf plants. Then in the F1 generation we will get the heterozygous dominant. Heterozygous dominant हमें F1 generation में मिल रहा है. अगर इस heterozygous dominant का हम क्रॉस करवा रहे हैं with both of its two parents, आपने यहाँ पे भी क्रॉसिंग करवा दी and you are doing the crossing with this parent also. हम इस पेरेंट के साथ भी क्रॉसिंग करवा रहे हैं और हम उस पेरेंट के साथ, we are doing crossing with homozygous dominant and we are doing crossing with homozygous recessive. दोनों ही तरीके के पेरेंट्स के साथ जब क्रॉसिंग हो रही है, then this type of cross is known as back cross. उस केस में हम इस क्रॉस को बोल देते हैं back cross. And this cross is used to improve the breed. यहाँ पे breed को improve करने के लिए या फिर किसी भी desired character जो है उस trait को, उस character को remove करने के लिए और या फिर कोई भी desired character को adopt करने के लिए next generation में present करवाने के लिए ये cross किया जाता है. This cross is known as back cross, where the cross of F1 hybrid is done with one of its parents. किसी भी parent के साथ होगा. Now let's see. Same चीज हमने यहाँ पे बोली है that when the cross is done with homozygous recessive, and same thing is in this test cross also. So by this we can say that all back cross, ये जो back cross है, back cross test cross भी हो सकता है. When we do the back cross and in the back cross when we are crossing the F1 hybrid with its homozygous recessive parent, जब हम homozygous recessive parent के साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं, then this cross will also known as test cross. तब इस क्रॉस को ही हम टेस्ट क्रॉस भी बोल देंगे. तो हम क्या कह सकते हैं that back cross could be test cross. back cross test cross भी हो सकता है, but test cross could not be back cross. test cross back cross नहीं हो सकता. So this is the back cross in which we can use any one of the parent to cross. तब उसे back cross बोलेंगे. यहाँ पे अगर हम देखते हैं suppose हमारे पास F1 hybrid है and in this F1 hybrid all the plants are the tall because of the presence of this dominant allele, that capital T. If we want that in the next generation सभी के सभी जो plants हैं वो tall plant ही हो,
टॉल प्लांट हो, आप अगली नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ प्लांट अगर नहीं चाहते, यू वांट टू रिमूव दिस जीन, दिस एलील्स ऑफ द जीन, जो टॉलनेस के लिए जो रिसेसिव एलील है, आप उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, देन यू कैन डू द क्रॉसिंग ऑफ दिस प्लांट विद इट्स होमोजाइगस डोमिनेंट, आप होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाएंगे, एंड बाय दिस क्रॉस इन द नेक्स्ट जनरेशन वी विल गेट ऑल द टॉल प्लांट्स, सभी के सभी जो प्लांट होंगे वो टॉल होंगे, वेदर चाहे वो होमोजाइगस टॉल हो या फिर हेटेरोजाइगस टॉल हो। लाइक इस तरीके से हम देख सकते हैं दैट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. So this would be the result of this kind of cross, where all the plants are the tall plants. Some are the homozygous tall and some are the heterozygous tall. Heterozygous dominant tall हैं. So in this way we can eliminate that recessive allele from this offspring. So this is the backcross which is used to improve the breed of any organism. So here these two types of the cross. One more type of cross we need to be discussed here, that is reciprocal cross. So let's start reciprocal cross. Reciprocal cross. Now let's see what is this. क्या है इस क्रॉस के अंदर? रेसिप्रोकल क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसके अंदर हम सेक्सेस चेंज कर रहे हैं पेरेंटली. Let's discuss with one example. Suppose we have taken two organisms, that organism A and organism B. हमने दो organism लिए हैं, and from the organism A we are getting the gametes, that male gametes. Male gametes we are getting from the organism A, and from the organism B we are getting the female gametes. इससे हम ले रहे हैं female gamete. Suppose here we have these two characters, that homozygous, and these two from this female gamete से हमने ये genes लिए हैं. And after crossing, जब हम इनकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो मिलेंगे ऑफस्प्रिंग, दैट विल बी AB. इसे और हम डिटेल में देख सकते हैं इस तरीके से. When we do the crossing, AA gametes will come from the male plant, male part of the A. ये A से हमें मिलेंगे AA alleles मिल रहे हैं, and from the B organism we will get the gametes, the alleles that present in the gamete is the BB. And after crossing, after fertilization, we will get the offspring with both of these two alleles, AB, 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 and AB. So this is the way. Here we can say that in this, यहाँ पे हमने जो crossing करवाई है, these are the male gametes, ये male gametes हैं, and these are the female gametes, ये female gametes हैं. This cross is this is a cross. And if we change the sexes, यानी कि अब हम क्या करें? The organism A from which we are earlier we are getting the male gamete. अगर यहाँ ये जो A organism हमने लिया है, यहाँ हमने B organism लिया. Now we change the sex. Now we are taking female gametes from the A and we are taking male gametes from the B. तो यहाँ पे AA, these are the female gametes now, and here the BB, these are the male gametes now. So what's happened? क्या होगा? इस केस में the AA, these two types of gamete will be formed here, and when we do the crossing, जब हम crossing करवाएंगे, these AA gametes will come from the female part of the plant, the BB come from the male part of the plant, and we get the offspring that is AB, 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 and AB. Now you can easily see there is no difference between the phenotype and genotype of organism. किसी भी तरीके का changes नहीं आते, but just what we did, we just changed the sex, we reversed that state. The organism which giving us the male gamete in the previous cross, now this organism is now giving us the female gametes, and that B, which are earlier giving us the female gametes, now it is giving us the male gametes. So this type of cross in which we reverse the changes or we exchange the changes, exchange the sexes of the organism to get the gametes, this type of cross is known as reciprocal cross. So हमने तीन तरीके के crosses discuss किए हैं, test cross, back cross, and reciprocal cross. These are the very important topics for your exams. In the next video, we will discuss about some exceptions of the Mendelian inheritance. Like in the case of law of dominance, we discuss the law of dominance. It has some particular exceptions also. In the next video, we'll discuss these exceptions of Mendelian inheritance.
Keep watching, keep studying, and keep learning. Okay?